your teacher and you're my teacher. So we're a combo of both. And here we start. I would like to invite my panelist, Mir Ali Shah from Karachi. Professor Saab, please come on this stage. Sorry, from Peshawar. Please, sir, iris apni position, apni jagah. Shah Saab is a fellow. He's इनके बारे में already बता चुके हैं sir, and he's heading the department of ophthalmology in Peshawar Medical College. He's a life member of OSP. Then we would like to call upon the host and the person who has made everything possible, our favorite. So he's the head, he's the principal, he's a teacher, he's a student, he's a friend, and God knows what. आपकी introduction करने की मुझे ज़रूरत नहीं है. So we go to Islamabad now, which I'd like to call upon Professor Amir Awan, and he is working in Shifa International and taking care of all the Islamabad VRO and even more. And finally, we'd like to call the General Secretary of OSP Center, Colonel Shahzad. He's a VRO, he's working and taking care of Islamabad right near the Margala Hills. And watch करते हैं कि मेट्रो से कौन आ रहा है कौन जा रहा है. उनके इनके इनके इनकी क्लिनिक से मेट्रो सुबह शाम नजर आता है, तो इनको ये भी पता होता है कहाँ पे स्ट्राइक है. If you want to know what's happening in the parliament and the judiciary, is the man. And finally, we'd like to start and here come. Where is the session किधर है जी? So we'll be looking at the approaches to the diabetic macular edema, and I will be asking questions from the panelists, but because of the shortage of time, we're not going to ask all the questions from all the panelists. We'll just pick and, because everybody knows and I think is very, very well learned in this. So this is the eminent audience. Myself, Amir Awan, I will know more professors and all that, simple names. Amir Awan, Shahzad Sheikh, Rashid Kamar, and Mir Ali Shah Saab. That's me, my name is Huma, and we'll start with the discussion now. So the first question of the panel discussion is for all of you, so it's nice that we just make it very crisp and a simple question that comes into the mind. That is the question that comes into the mind. In my mind is, first thing that crosses your mind looking at a patient with diabetes, somebody walks in, and आप उसको देखते हैं कोई diabetic macular edema. आपके mind में पहले सवाल क्या आता है? क्या आप सोचते हैं कि ये diabetic macular edema का patient आ गया है? So what comes in your mind? First thing. Let's start with the Shahzad sir. Diabetes का it's not just diabetic macular edema का patient ही आएगा. जो patient आएगा वो diabetes mellitus आएगा, और जो patient diabetes mellitus आएगा उनमें more than 50% hypertension. I think rather than जो first उसका workup है, that has to be a generalized workup, not only the retina. You have to assess the general history में सबसे पहले आपने पूछना है कि what's the duration of diabetes and along with that hypertension, और उसके साथ the control of diabetes. अभी हमारे सेटअप्स में कंट्रोल इतना हैजर्ड है कि हम जितनी मेहनत उस पर कर लेंगे वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाती है because the diabetes is not being maintained. After that, basics. विजुअल एक्टिविटी. पेशेंट हमारे पास अपनी डायबिटिक मैक्युलर एडीमा को ट्रीट कराने नहीं आता, वो अपनी विजुअल एक्टिविटी को ट्रीट कराने आता है. अगर हम बेसलाइन विजुअल एक्टिविटी नहीं लेंगे, हम ओसीटीज तो उसको दिखाते रहेंगे कि ये देखो तुम्हारी थिकनेस 500 से 300 पे आ गई, 300 से 250 पे आ गई, लेकिन पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज विजुअल एक्टिविटी. सो बेसिक्स पे हमेशा स्ट्रेस करें कि आपने विजन से स्टार्ट लेना है और सही विजन. उसके बाद आपने एक कंप्लीट उसकी असेसमेंट करनी है. डायबिटीज डज नॉट अफेक्ट जस्ट द रेटिना, डायबिटीज अफेक्ट्स एवरी पार्ट ऑफ द आई. तो आपने फ्रंट से लेके बैक तक सारी असेसमेंट करनी है, कैटरेक्ट है नहीं है. हम ये तो कहेंगे कि डायबिटिक मैक्युलर एडीमा कम हो रहा है और कैटरेक्ट बढ़ है, तो विजन वी नीड टू नो व्हाई द विजन इज नॉट इंप्रूविंग एंड इफ इट इज इंप्रूविंग व्हाई इट इज इंप्रूविंग. फिर स्पेसिफिक डायबिटिक मैक्युलर एडीमा पे जब आ जाते हैं तो दो चीजें आपने उसमें जरूर देखनी. वन, इस्कीमिया है या नहीं, because ischemia needs to be catered for regarding the
prognosis as well as your plan of management. And secondly, neovascularization उसमें है या नहीं? Because if there is neovascularization, your plan changes, and if simple diabetic macular edema, then you plan differently. Amen. Would you like to add to this? I think mostly things are will agree. I will second करूँगा इनकी बात को. थोड़ा सा ये कि जब पेशेंट आता है तो पेशेंट को जनरली आप देख रहे होते हैं, वॉक करके आ रहा है, व्हीलचेयर पे आ रहा है, किस तरह एनालिसिस पे तो नहीं है, फेस से आपको इसका अपीयरेंस से पता लग जाएगा पेशेंट एमेसिएटेड से अपीयरेंस होगी, डार्क सी स्किन होगी, बहुत ही कमजोर सा होगा. तो दोस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. और जिस तरह शहजाद ने बताया कि एज अ होल मरीज को आप ठीक कर रहे होते हैं, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर पार्ट उसका देख रहे हैं. तो डायबिटिक को एज अ होल आप लेंगे. Thank you, Professor Huma. Diabetic patient is in fact a great dilemma, and when the patient, such patient comes to us, we generally look at it's a must to have his blood pressure, lipid profile, and we explain to the patient that it's not a single visit disease, not a single injection disease. You have to come and go, and the patient generally they change from doctor to doctor, and generally they think that we will improve with one injection, and it doesn't improve. So the diagnosis was either wrong or the treatment was wrong. So we have to counsel the patient properly. And as long as the patient generally they are not satisfied. Most of the diabetic patients they are not satisfied with our treatment. So we'll tell them you control the diabetes and we will control your edema. Please add a little to it. Okay. अच्छा मेरा स्टाइल इस तरह का है कि जो once I see a patient diabetic macular edema तो मेरे दिन में आता है कि no I have to sit with him. तो मैं यूजली अपनी चेयर रिलीव करता हूँ, उसे कहता हूँ भाई बात सुने, ये 3 बंदों का काम है. You have to find a good physician, you have to find yourself and you have to find a good ophthalmologist. वो मैं हूँ या कोई और हो. तो जब तक आप फिजिशियन आपकी ये चीज़ें ठीक नहीं करेगा, आप खुद अपने आप की बात नहीं मानोगे, वॉक नहीं करोगे, डाइट अच्छी नहीं करोगे, और जब तक मेरी बात नहीं मानोगे तो तकरीबन 3 से 4 महीने लगेंगे. वो कम टू बेस लाइन, जो बच गया वो बच जाएगा, उस पर हम इनिंग खेलेंगे. तो प्रॉपर्ली उसको हमें फोकस करना पड़ता है कि उसको भी एक्सरसाइज करें, उसका फिजिशियन को भी उसके अलाइन करें और खुद भी अपना अलाइन करें. जब तक अलाइन नहीं होंगे तो ये ठीक नहीं होगा. तो मेरा इस तरह का स्टाइल है थोड़ा. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, and I'd just like to add, General Mazhar Saab, please आप इसको add करेंगे थोड़ा बहुत, because I thought we were going to take questions from the audience also. कि आपके ख्याल में जो पेशेंट आएगा आपके पास, something is happening. What is the first thing that crossed your mind when you're looking at a patient with diabetic macular edema? उसको diabetic retinopathy है, उसको है, but he has, when you examine, you say there's a diabetic macular edema. How would you, what things cross your mind? I think so. जो important चीजें तो already discussed हो गई हैं कि you have to see as a patient as a whole. This is the I think the crux of the matter. You have to see the patient, and I think so. तो मैं पहली बात करता हूँ ना, and once it is an edema, you have to tell all पाकिस्तानी patient कि जी इस बीमारी को अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो आप अंधे हो जाएंगे. I think so. This is the word which I use. Pass it to the patient and to the क्या नाम है the person along with them, and along with them telling whatever we are saying it is a multi-dimensional disease. I think so. This is the whole crux कि patient को क्योंकि इसमें मैं सिर्फ एक ऐड कर दूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है, मेरी एक्सपीरियंस ये है कि हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि ये डायबिटीज की वजह से हमारी आँख खराब हो रही है. डायबिटीज इज द कॉज. दे आर ऑलवेज थिंकिंग कि हमें मोतिया हो गया है कुछ हो गया, and telling them that it is also one of the irreversible disease which is going to lead to loss of vision and is not going to like we tell about kala motia or glaucoma. I think so this is the most important. Thank you, gentlemen. थोड़ी बहुत इसके जो साथ साथ एक इसकी summary भी कर लेते हैं. So what we got from this question is that one, you need to be very good about the counseling of this patient, because these patients are going to stay with you for a very, very long time. So counsel and be very blunt with them and tell them that if you're not going to look after him, you're going to go blind. Because हम बहुत दफा carefully बात कर रहे हैं इनसे कि किस तरह करने, और आप अगर seriously उनको ना बताएं तो they also take it very lightly. You have to be very point blank with them that this is how you treat them. This is whether you take one ophthalmologist, that's your choice, but this is something that is for a very long time. It's not something that you will come and go. Multiple medications, hybrid trials, you change them, you might go to resistant, but that patient is there with you or with an ophthalmologist for a very, very long time, and be very
not be very like badly blunt, but be blunt with them and let them know what is coming next with them. So question 2 is what criteria is important when you are assessing diabetic macular edema? And we'd like to start with Ahmed, please. फर्स्ट पेशेंट जब आता है तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ विजन से स्टार्ट होता है, हिस्ट्री ब्रीफ सी हिस्ट्री जो है मेरा जो भी साथ असेस कर रहे होते हैं वो ले रहे होते हैं, विजन इज इम्पॉर्टेंट। तो विजन होके जब पेशेंट आपके पास आता है तो डिटेल हिस्ट्री जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट का डायबिटिक कंट्रोल कैसा है, कोलेस्ट्रॉल कैसा है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कैसा है, HbA1c रिसेंटली अगर किया है तो क्या है, बहुत से मरीजों को पता ही नहीं होता कि HbA1c क्या है। और फिर साथ ही इंपॉर्टेंट आप जब देखते हैं पेशेंट को, विजन आपने चेक कर ली, क्लिनिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, स्लिट लैम्प पे आप जिस तरह फ्रंट पे बात हो रही थी कैरेक्टर को असेस करें सारी चीज़ों को, देन यू लुक फॉर के प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है, नॉन प्रोलिफरेटिव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रोलिफरेशन के साथ आपकी मैनेजमेंट डिफरेंट होगी। तो यू लुक फॉर दैट कि न्यू वेसल्स तो नहीं है, कॉटन वुड स्पॉट्स कितने हैं, इंटररेक्टल माइक्रोवेस्कुलर एब्नॉर्मलिटीज कितनी हैं। कम टू मैकुलर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसका आपको असेस करें, उसमें देखें कि हार्ड एक्सुडेट्स हैं, कोई फ्लूइड है, मैकुलर रिफ्लेक्स कैसा है, इज इट सेंटर इन्वॉल्विंग और इज इट नॉन सेंटर इन्वॉल्विंग, तो उसका थोड़ा आप आइडिया कर रहे होते हैं। फिर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए चीज़ होती है OCT, बहुत ज़रूरी है। आई डेफिनेटली गेट OCT फॉर ऑल द पेशेंट्स, तो जितने मेरे पेशेंट होते हैं उनके मैं OCT ज़रूर करूँगा और उसकी बेसिस पे फिर मैं डिसाइड करूँगा कि कैसे मैंने आगे मैनेजमेंट, नॉट इन एवरी केस आई डू FFA, अगर मुझे सस्पेशन होगा तो उसमें मैं फ्लोरेसेंट एंजियोग्राम करूँगा या OCT विच इज़ नॉन इन्वेसिव वो मैं उसमें कर रहा हूँ, लेकिन OCT इज़ अ मस्ट है। तो वो चीज़ें असेस करके देन आई विल गो फर्दर एंड मैनेज द पेशेंट अकॉर्डिंगली। Would you like to add to it, Shazad? Yes, in fact, the most important thing is to do an UCT. But some patients are somewhere if UCT is not available, we have to, and that's a nice guidelines as well. That's we have to measure the visual acuity. If 1 or 2 lines improvement is there, which is actually 5 letters improvement, then the improvement is there for 3 injections. And if it's not there, then we have to change or modify it. Naveen, would you like to add to it? That's all actually सारा इसमें कवर हो गया है, लेकिन इसमें असेसमेंट में अगेन वही एम्फसाइज करना है कि सिस्टेमिक कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम वी मिस इट एट सम प्लेस, और जैसे बता रहे थे कि पेशेंट का HbA1c शुड बी मॉनिटर, पेशेंट फास्टिंग ऑन रैंडम प्लेस समटाइम कंट्रोल होती है और दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद उनका। और सेकेंडली लिपिड प्रोफाइल जो है वो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब पेशेंट आता है 50, 60, whatever you're carrying with you is the most important thing. You can pick up the DME on that, and in looking at the amount of edema or amount of the DME, the severity, you can, you would know okay, what kind of, what kind of baseline is that, and how much improvement is going to take place with the treatment that you're going to take, that you're going to plan for this patient, because every patient is different and every patient's treatment plan will be different. So we look at question number 3. What prognostic factors are relevant to the anatomical success of DME? Shazad sir? Madam, I think one is the control of diabetes. Like I said, जितना uncontrolled diabetes होगा हमारी सारी मेहनत पे पानी फिरता जाएगा. Secondly, regarding the retina, the amount of ischemia, cotton wool spots. Ischemic maculopathy has a very bad visual prognosis. Thirdly, जो लास्ट वाला था उसमें और इससे भी रिलेटेड है कि 2 चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है एग्जामिनेशन में। वन इज अनडाइलेटेड आइरिस एग्जामिनेशन एंड सेकंड इज गोनियोस्कोपी। ये दोनों चीज़ें भी असेसमेंट में ज़रूरी हैं फॉर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। इसमें जब भी पेशेंट डायबिटिक मैकुलर एडीमा का मेरे पास आता है तो मेरे लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं कि टाइप ऑफ एडीमा क्या है, क्या वो डिफ्यूज एडीमा है या उसमें हार्ड एक्सुडेट्स डेवलप हो रहे हैं। तो एक बहुत ही मैसिव अमाउंट ऑफ हार्ड एक्सुडेट्स अगेन टेल्स मी कि स्टोरी इज प्रॉब्ली प्रॉब्लम। और सेकेंडली वन आई गो फॉर जिस तरह के जनरल साहब कह रहे थे उसको हमें आजकल हम सिर्फ DME देख के और बगैर समझे हम उसका OCT करा लेते हैं। डिटेल देखने से पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली जब मैं OCT कराता हूँ तो मैं आई जस्ट लुक एट दी ISOS जंक्शन कि वो उसका क्या इरादा है मेरे साथ चलने का। फिर देखता हूँ कि हार्ड एक्सुडेट्स है तो उनका लेवल क्या है, वो अंदर इनर रेटिना में पड़े हुए या वो RP के साथ पड़े हुए।
तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट बातें देख के पता चल जाता है कि जब पेशेंट से बात करनी है, इफ गोइंग टू गो फॉर एंटी-VEGF, तो उसकी प्रोग्नोसिस क्या है। कुछ लोगों को हम कह देते हैं कि आपका इंजेक्शन लगाएंगे यू कम बैक, मे बी स्लाइटली। कुछ कहते हैं कि हम यहाँ रोकने की कोशिश करेंगे, मीन्स कि प्रॉब्लम यू नॉट कम बैक। तो इन 2 एरिया में हमेशा देखता हूँ कि इसमें प्रोग्नोसिस एज अ प्रोग्नोसिस फैक्टर है DME। Prognosis wise, these are better if you do focal laser instead of giving multiple injections every month. And after every month, they recur. So, for the focal and searching it, the important thing is if they are haphazard, they are more hard exudates involving the whole macula and the central. So, these are bad prognostic signs. And these are, in fact, the patients where we have to switch from anti-VEGFs towards the steroids. Thank you so much. Professor Ahmed, would you like to add to this? आपका सेशन है, आप लोग एक कुछ आपका would you like to add to the anatomical factors जो इसकी करेंगे? The hard exudates. Whenever I see diffuse or multiple hard exudates, my threshold for the steroids it goes down. So I am mentally prepared to give intravitreal or suprachoroidal steroid in these patients whenever I see multiple hard exudates. So I do start with the conventional anti-VEGFs, but I am mentally prepared and I also prepare the patient that we may have to give an injection for which there are certain complications like raised IOP, etc. So the presence of hard exudates, it really rings a bell whenever there are multiple hard exudates. So thank you, gentlemen. So this matters a lot. So if you look at that, that somehow limits the anatomical success from the beginning. That you have to be very, have to take these patients on a longer journey with you, and you have to have multiple treatment options in mind, especially when you're looking if from the start these conditions are present. So question number 4: what prognostic factors are vital for the functional success of diabetic macular edema? We'll start with Shasa. I think it's the same as with the anatomical. It's, the important thing is that if there is ischemia, so function-wise, this patient is not going to improve if there is retinal or macular ischemia. Okay, I think both questions are somewhat connected. Yes. जो हम लोग बात कर रहे थे पहले उसमें विजन इज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पेशेंट की नज़र कैसी है और व्हाट यू आर लुकिंग एट द मैकुला, तो आपको काफ़ी हिंट दे देती है। अगर इस्कीमिया है तो आपको आइडिया हो जाए। आई थिंक यहाँ पर ओसीटी बहुत ज़रूरी है, और ओसीटी अब हमें फ्रीली अवेलेबल है छोटी छोटी जगहों पे भी। तो क्लिनिकल असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, जैसे जनरल नजर साहब ने कहा, वो आपने पिक करनी है। लेकिन ओसीटी का आपको बहुत सी डिटेल दे रहा होता है जो आपको नहीं पता लगता, और वो हम इवन रेटिना स्पेशलिस्ट भी कई दफ़ा क्या होता है हम देख रहे होते हैं, हम चीज़ें मिस कर जाते हैं, लेकिन जब ओसीटी करते हैं हमें और पता। तो ओसीटी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनर रेटिनल स्ट्रक्चर कैसे हैं आपके, एक चीज़ होती है ब्रेल डिसोसिएटेड रेटिनल इनर लेयर्स, अगर वो आपकी डैमेज है, या आउटर, जिस तरह डॉक्टर राशिद ने मेंशन किया, आउटर रेटिनल स्ट्रक्चर कैसे हैं, आईओएस स्ट्रक्चर कैसा है, एक्सटर्नल लिमिटिंग मैग्नेट को डैमेज तो नहीं है, आपकी नीचे की जो फोविया कोराइड कैसी है उस पर, अगर ये पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है अगर डैमेज है। अगर इंटररेटिनल एडीमा है, सबरेटिनल एडीमा है, कोई विट्रोमैकुलर एडिशंस नहीं है ऐसी, तो दैट्स गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, उसमें आपका रिस्पांस बेहतर आएगा। तो आई थिंक ओसीटी शुरू में लाजमन करें अपने पेशेंट का, अब देन मैनेज द पेशेंट अकॉर्डिंगली। Shazad, would you like to add to it? मैडम इसमें जो ओसीटी की बात की, आई थिंक उसमें ईआरएम को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्टरी जो फैक्टर आगे अभी डिस्कस भी होना है, तो ईआरएम को जरूर रूल आउट। I think just like Amir said, that these two questions in a way are interconnected and divided into, because we need to know that when you're looking at the anatomical, so you have to look at the clinical features at that time. And when you're looking at the functional success, maybe the clinical features are improving, but you have to have an OCT guideline baseline, and you continue looking at it, because just like Shazad and Sir said, that you have to look at the ERM, you have to look at the different layers, OCT guided different layers, to see which will help in improving, having a function success, or which will limit the improvement of vision, because at the end of the day, it's vision that we're talking about. The function success is basically how much vision you're giving back to the patient, and that's what they're concerned about. So for that, I think it's very, very important that OCT is
their OCT as a baseline is taken and whatever treatment you're taking, you're going to do आपको OCT के साथ उसको combination में रखना है to improve on that. I mean that is the general consensus of the panel, right? Okay, here we go. So question number 5. This is something that I have seen, and this is a picture of my patient, and he had come from Canada, and a smoker, and this is bilateral. He had this kind of a picture. His vision was really bad. It was like I could not tell. Sometimes you'll count him like this. You look from some side, somewhere it will come to 660. And looking at this kind of exudates and this kind of maculopathy, do you think this will be added on with the diabetic macular edema, or you would like to call it as a diabetic maculopathy separately? One, and if so, how is it managed? We'd like to start with Professor, the host, the ghost. This picture is again, it's a bad prognostic picture. Whenever you see the heart exudates, it means it's a plaque-like material जो कि जिसको निकालना बड़ा मुश्किल है. और यूजुअली ऐसे पेशेंट को आप जो बात कर रहे थे पहले शहजाद से नवीन कह रहे थे कि हम बहुत चीज़ मिस करते उसमें लिपिड प्रोफाइल मिस करते हैं. तो मैं ऐसे पेशेंट्स को जिनमें बहुत हार्ट एक्सीडेंट्स हैं उनको मैं ज़रूर चेक करता हूँ बिकॉज देयर आर एसोसिएशन बिटवीन HbA1c एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स विद हार्ट एक्सीडेंट्स. एक तो इसको मैं कोशिश करता हूँ फिजिशियन से रब्ता करके स्टैटिन्स में जरूर डालता हूँ इस पेशेंट को. दूसरा OCT करके मैं जरूर देखता हूँ कि इसमें फ्लूइड एलिमेंट कितना है और प्लाक एलिमेंट कितना है. फ्लूइड एलिमेंट है आई कैन एलिमिनेट दैट एलिमेंट विद द एंटी-VEGF. प्लाक्स को मैं रिमूव नहीं कर सकता. अब इसकी बात करेंगे तो इट्स अ डिफिकल्ट सिनेरियो, लेकिन मैं जिसमें इससे रिलेटेड बात करना चाह रहा हूँ ये है जो जनरल साहब कह रहे थे कि इफ यू फाइंड अ लिटिल मैकेनिज्म दैट इज बेसिकली द प्रॉब्लम जो कि हार्ट एक्सीडेंट देगा आपको तरसनियत देगा. अगर आप शुरू से उसको पकड़ना शुरू कर देंगे उसको जिस तरह अमीर शाह कह रहे थे उसको फोकल लेस कर देंगे मैकेनिज्म को जो कि 500 से बाहर पड़ा हुआ तो आपके पास ये पिक्चर आती नहीं है. ये पिक्चर आपको डिफ्यूज मैकुलर एडीमा नहीं आती, आपको मैकेनिज्म देते हैं मेनली. लेकिन जब आ जाते हैं तो ये भी देखना जरूरी है कि ये रेटिना के इनर लेयर्स में है या आरपी के पीछे. आरपी के पीछे वाले को कुछ नहीं कर सकते आप. दैट्स मेक गोइंग टू मेक स्कार. वो आरपी का मेटाप्लेजिया करेगा, स्कार आ जाएगा. जो इनर रेटिनल लेयर में पड़े उसमें बहुत से काम है जिसमें अहमद बता रहे थे कि स्टीरॉइड देने पड़ते हैं जिससे कि बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है हमारे लिए. उसमें लोगों ने सर्जरी भी की है, लोगों ने रेटिनोटमी करके उसको फ्लैश आउट भी किया हुआ है, लोगों ने मैकुलर की वो अंदर सर्जरी की हुई है, लोगों ने स्टीरॉइड दिए हुए हैं, लोगों ने डेक्सामेथासोन इंजेक्शन लगाए हुए हैं, अब सब कोलेटरल ट्रांसफ्यूजन भी आ गया हुआ. लेकिन बाय एंड लार्ज दिस इज अ बैड प्रोग्नोस्टिक एरिया. लेकिन इसके जर्नी जो हुमा कह रही थी लंबा होता है, उस पेशेंट को कम से कम हम ये जरूर बताते हैं कि यहाँ रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू इंप्रूव. तो इस एरिया को सिर्फ एक ही तरीका पकड़ने का कि प्लीज कीप एन आई विद द लिपिड प्रोफाइल, नंबर 1. Number 2, please keep an eye on the very little macular aneurysms which are surrounding the macula. Please उसके ऊपर उसको लेज करें शुरू में, उसको छोड़ें मत. अभी मरीज को कुछ भी नहीं होता, उसकी विजन बिल्कुल कम नहीं होती, तो आपके पास आता है डायबिटीज है, उसको प्लीज लुक देखिए मैकुलर एनेरिज्म में पड़े हुए. They are going to make mess with the arteries. मेरा ख्याल से चलना है इसमें. Thank you so much, gentlemen. Sir, can you add to it? In fact, it's the most devastating scenario. ऐसे पेशेंट आ जाए तो उनको काउंसल करना चाहिए कि ये आसान काम नहीं है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर. और यही मरीज है जिनकी हम लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर चेक करने चाहिए. एंड द सेम This is a prize position मैंने उसकी तस्वीर रखी है, trending from this to a clean retina. So I especially brought this because though it's very difficult, to revert the exudates and making them go away, but the addition of I think the antilipids and those kind of things, and with the long terms, जिसमें आपके steroids भी आ रहे हैं, आपके anti-VEGFs आ रहे हैं, you will be surprised there are certain patients in which there is clearing of heart exudates. So we will share that picture on the forums. Somehow मैं देख रही थी उसी में लगाना भूल गई, so my apology, but I will share that picture. So what Lisa, what would you like to add? इसमें थोड़ा सा ऐड करना था. मेरे पास पेशेंट्स आते हैं यूजुअली लाइफ में उनको फिनाफिब्रेट पे डाल देता हूँ. उसकी जो डोज है 67 मिलीग्राम इनिशियली, बिकॉज वो पेशेंट के लिए टॉलरेट नहीं होती. आफ्टर 1 month पेशेंट इज टॉलरेंट, देन कैन द स्टैंडर्ड डोज इज 200 मिलीग्राम. तो मैं पेशेंट को 3 से 4 महीने के लिए देता हूँ. सरप्राइजिंगली दे आर स्टार्टिंग क्लियर. मतलब डिस्पाइट इसके साथ आपको पेशेंट को गाइड करना पड़ता है कि सिस्टमिक कंट्रोल कर सके. और OCT डेफिनेटली इफ देयर इज एडिमा देन यू इंजेक्ट एंटी-VEGF. स्टीरॉइड्स में अभी What exactly is a resistant diabetic macular edema, and what are those clinical and diagnostic factors that you use to label them? Shehzad sir?
इट्स अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्योंकि रेजिस्टेंट मुख्तलिफ पेशेंट्स में मुख्तलिफ आप इसको चेंज करके सिंप्लीफाई कर दें। अच्छा फॉर मी अगर हमने 3 इंजेक्शन लगाए, लोडिंग डोज दी है और उसकी विजन में और एडीमा में फर्क नहीं आ रहा तो दिस फॉर मी दिस वुड बी अ रेजिस्टेंट केस। अब रेजिस्टेंस केस होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसकी कॉज क्या है रेजिस्टेंस। क्या हमारे वर्कअप में कोई गड़बड़ थी, क्या हमने कोई ऐसी चीज़ मिस कर दी, इस्कीमिक है, ERM है, प्लस जो हम लगा रहे हैं इंजेक्शन, आर बी श्योर कि वो इंजेक्शन ठीक था। 4 की बजाय 40 डिग्री पे इंजेक्शन पड़ा दे और हम लगा दें और फिर हम कहें कि रेजिस्टेंट है, वो तो उसकी एफिकेसी नहीं होगी। तो दिस इज अ मल्टी फैक्टोरियल थिंग जिसमें पेशेंट का भी फैक्टर है। इधर से आप इंजेक्शन लगा रहे हो, उधर से उसकी जो HbA1c है वो 12 पे हो। तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी लुक्ड इन। वही रेजिस्टेंट का आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि क्या मेनली तो आपने डायग्नोसिस को रिविजिट करना है, जिस तरह शहजाद ने मेंशन किया है। तो मैं जिस तरह पहले जिक्र कर रहा था कि आई वोंट डू FF इन एवरी केस, हम जो जिक्र कर रहे थे चीज़ का, उसमें फिर आपको देखना पड़ेगा, यू नीड टू गो फॉर वाइड फील्ड आप कराएंगे ताकि देखें कि आप स्कीमिया तो नहीं मिस कर रहे हैं। दूसरा आल्सो डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा लीकेज है। जिस तरह आपने केस शो किया था जो, दैट्स नॉट गोइंग टू क्लियर विद 3 इंजेक्शन। वो उस तरह का पेशेंट है, मे बी 12 आपको पूरा साल ही इंजेक्शन, यू हैव टू कैरी ऑन मंथली इंजेक्शन ना, और डेफिनेटली इट गेट्स क्लियर। और पेशेंट की विजन काउंटेड फिंगर से 6/6 भी होते देखिए, जब हार्ड यूजर सेंटर से क्लियर हो जाएंगे बहुत बेहतर हो जाएगी। तो 3 आप लगा के देखें, OCT जरूर करें, उस पर देखें रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा जस्ट रिविजिट द डायग्नोसिस, मजीद टेस्ट करके देखें कि उसमें क्या है। और अगर उसकी कोई चीज़ नहीं है, लेजर की ज़रूरत है, स्कीमिंग है, तो आपको लेजर करनी पड़ेगी। जब तक आपका लेजर नहीं होगा, VEGF काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो वो इंजेक्शन कुछ नहीं करेंगे। तो वंस यू विल डू इट, आई वुड कैरी ऑन विद एंटी-VEGF। हो सकता है मैं उसी एजेंट के साथ ही रहूँ, 2 और लगाऊँ और फिर देखूँ, देन बिफोर स्विचिंग टू सम अदर एजेंट्स। तो मेरी अप्रोच है। इसमें है कि मैं उसकी जो OCT है आफ्टर 3 इंजेक्शंस, अगर OCT में 20% से कम इम्प्रूवमेंट है, then this is labeled as resistant. अगर उसकी विजुअल एक्टिविटी 1 लाइन या 2 लाइन इम्प्रूवमेंट या 5 letters नहीं हो रही, तो that after 3 injection or 3 months we can label this patient is resistant to treatment, and that's the time that we switch on to intraocular steroids. So, ladies and gentlemen, we need to know that the term resistant, you have to be careful when you call it resistant. You need to know it's actually resistant while calling it resistant. Maybe it's a vague term, maybe from the very beginning, the thing that we think that is resistant is not, maybe your treatment plan was not right, maybe your evaluation was incorrect, or maybe, just like Shah Sahib said, maybe with the treatment, if it's not improving, then you might then move towards the calling it resistant, but maybe seeing the patient for the very first time, you should probably not use this word. So, next question, what anti-VEGF, now we go towards the treatment, which we all are using in every setup. I think with the coming of the anti-VEGFs, it changed the total scenario of not just diabetic macular edema, but macular edema as a whole. So whether it's because of it's like other problems, retinal problems, wherever you see this is like become the first line of treatment. Just inject an intravitreal anti-VEGF, which are different types available. So what anti-VEGF protocol is routinely followed for the DME patients in your practice? So we're now looking at your practices, and how often is OCT, and now with the advance of OCT and availability of OCPA repeated, how often you repeat these 2 tests for your patients with diabetic macular edema? And we should like to start with the audience, if that's okay. Can we start with you, Khazir? Thank you very much. I think the routine protocol that we follow is depending upon the level of thickness on OCT. If it is around 100 micron more than the normal for that age, we give standard Avastins for once monthly for 3 months. And before that, the baseline OCT. And after 3 months, we check the visual improvement and repeat those tests. Sorry. After having the baseline OCT, we do once monthly Avastin injections for 3 months, and then repeat the OCT scan and the follow-up. If there is improvement, we can withdraw the treatment, and if there is still no improvement, then we can go for OCT
and add steroids depending upon the type of edema. Thank you. Sir, Rashid sir, would you like to tackle this question? देखिए, जितने भी पेशेंट्स आपके पास डायबिटिक मैकुलर एडीमा के आते हैं, उसमें यू हैव टू गो फॉर एन ओसीटी एंड फाइंड आउट द फ्लूइड लेवल. जितना फ्लूइड होगा उतना एंटीवेजिव काम करेगा. हार्ड यूनिट का एंटीवेजिव काम नहीं करता. इट्स सिंपल ट्रूथ भी है. सेकेंडली, यू हैव टू गो फॉर द पैरामीटर्स. मेरे लिए एसेंशियल है जिस पेशेंट ने जस्ट देना कि उसका HbA1c कितना है, इंपॉर्टेंट. उसका सिस्टम में उसको CVA, इस्केमिक हार्ट डिजीज की हिस्ट्री कैसी है, और उसका रीनल प्रोफाइल कितना है. आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स हु हैव 1.9 क्रिटिकल लेवल. यू गो फॉर अ वेस्टर्न एंड दैट्स गोइंग 2.8. और मैंने बहुत से पेशेंट ऐसे भी देखे हैं. एक डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए जिनका आज एंटीवेजिव लाया तो मेरे इमाम मस्जिद से मर गए. इसलिए मरे थे. मैं बस ऐसे ही मर गया. अल्लाह की तरफ से उनकी मौत आ गई थी. तो आपको प्रोटोकॉल डिवाइस करना पड़ेगा पेशेंट की स्टेटस देख के, उसका रीनल प्रोफाइल देख के. और नॉर्मली सोशल अगर हर चीज़ ठीक है तो यू गो फॉर वेस्टर्न, नो प्रॉब्लम, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है. और 3 इंजेक्शन लगाते हैं. हर इंजेक्शन के बाद आपको देखना पड़ता है कि इफेक्ट हो रहा कि नहीं हो रहा. यू हैव अ प्रॉपर डेफिनेशन द DRC और नेट प्रोटोकॉल. ये फेलियर किसे कहते हैं, सक्सेस किसे कहते हैं, ऑप्टिमल लेवल किसे कहते हैं. तमाम लेवल्स आपको देखने पड़ेंगे. उनके मुताबिक आपको सेकंड, मैं रूटीन के हक में नहीं हूँ. पहले में आपको 10% की बजाय 10% बढ़ गया, तो वाई गोइंग विद वेस्टर्न. यू हैव टू स्विच ऑफ. आपको देखना पड़ेगा. 3 लगाना हदीस नहीं लिखी. आपने देखना है कि व्हाट इज सक्सेस. क्या आपका 10% कम हुआ है, क्या आपके 5 वर्ड बढ़ गए हुए, नहीं बढ़े बल्कि कम हो गया, बढ़ गया लेवल, तो मतलब यू आर ऑन द राइट रॉन्ग ट्रैक. तो मेरा ख्याल ये है कि इट्स अ वेरी कस्टमाइज्ड एरिया है जो आपको बहुत पढ़ लिख के, पेशेंट की हालत देख के, सोच समझ के और अपने आप को अकाउंटेबल समझ के आपको देने पड़ते हैं. मेरा ख्याल ये. थैंक यू. थैंक यू. आप इसको कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 2 को, राइट? और अगले पे भी जो सवाल किया गया था हरुण आपसे भी करेगा. व्हाट और हाउ ऑफन आपके, बिकॉज यू बिलीव अ लॉट इन OCTs, सो हाउ ऑफन इज OCT and OCTA also used for assessing DME? And then this, is there a role of biofilm effect in assessing DME patients? So I think Harun OCT का तो यही है कि फर्स्ट टाइम बेसलाइन हो गया, उसके बाद और विजन हर दफा क्या होता है कि विजन चेक भी हो रही है. दैट गिव्स मी क्लू. अगर किसी वक्त भी विजन कम हो गई है पेशेंट की, आई विल सी द पेशेंट, और इफ आई नीड टू इन्वेस्टिगेट फर्दर नाउ आप OCT के लिए क्या करेंगे? जी, नॉट द इंजेक्शंस. OCT हाउ ऑफन यू डू इन्वेस्टिगेशन के बाद 3 करके उसके बाद आई विल डू बेसलाइन करेंगे. जी, बेसलाइन OCT 3 इंजेक्शन, देन आई विल डू OCT, सी हाउ. What about OCTA? OCT I may do initially, not all the time I will do. Initially अगर मुझे लगेगा कि विजन पे I'm suspecting कि ischemia है कोई सेंट्रल का, I will do OCT मैं करूँगा. But not all the times. Follow up में मेरे लिए ज़्यादा important OCT है. Look for. As you know, moving from a weak statement to a resistant one. So do you think that what actually factors are available that results in this, this not improvement at all with the 3 or 4 injections? What are those factors that come to your mind? कि ये नहीं हो रहा, injections के बावजूद भी नहीं हो रहा. We can start with Amit. इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो अपने विट्रोमैकुलर एडिशन पे देखना है, कोई फ्रैक्चरल एलिमेंट तो नहीं है, क्योंकि मे बी मिसिंग है. अगर आपने इस तरह नहीं किया, आप उसको मिस कर रहे हैं. सेकेंडली इम्पोर्टेंट थिंग इज इस्कीमिया. दैट इज देयर एनी इस्कीमिक